Hello students, welcome to my channel. Our topic of discussion is sexuality and pre-fertilization. The topic of class 12th. So the topic was pre-fertilization, gametogenesis, gamete transfer, fertilization and post-fertilization events. These are the stages of actually sexual reproduction and how pre-fertilization events occur, how gametogenesis occur, gamete transfer, how they are going from one plant to another plant or in the same flower actually. So and finally there has to be fertilization, and after fertilization the post fertilization events, basically we are going to see fruit. Post fertilization events, what we eat is that fruit is the result of post fertilization event. And how is that so? Let's discuss. See, in lower plants the fertilization is through water. That is, taking the example of Thallophyta, the basic plants, thallophytes, example are algae, then bryo, you know it well, then pteridophytes, then gymnosperm, and finally angiosperm. The picture you are seeing is the example of angiosperm. It is the advanced plant having flower. Gymnosperms are those having no flower, naked seeds. They don't bear any flower, they are just naked seeds. Now we are going to discuss fertilization, basically gamete transfer. How gamete transfer occurs? Either it is self-pollinated, either it is cross-pollinated. Let's see. The female gamete, on the other hand, lies inside the ovule. And where is the a ovule? Part of the ovary, just base of the flower, which together with the style and stigma comprises the pistil. See, stigma, the upper portion stigma, then this length is the style, this entire portion is the pistil. And what is pistil called? Pistil is the female part. This stigma, style, ovary, this collectively called pistil, that is the female part, or it is collectively called gynoecium. Gynoecium makes the female part of the flower, towards which the anther or the pollen grain is going to land on. For fertilization, it is necessary for pollen grains to be deposited on the stigma so that they reach the embryo sac. This deposition occurs in different ways in different plants. In the case of monoecious plants, such as the pea plant, the anther sheds the pollen grains soon after they have matured, which then fall on the stigma. In the case of dioecious plants, the transfer of pollen grains to the stigma takes place through pollination, a process in which wind, insects or bees deposit the pollen on the stigma. These pollen grains then germinate and produce a pollen tube that contains the male gametes. This tube penetrates the stigma and style. देखो, इतना ये पूरा पार्ट तुम्हारा ये क्या है? पिस्टिल है. इस पिस्टिल में सपोज करो एक हनी बी के ज़रिए एक पॉलन ग्रेन, एक क्यों बहुत सारे पॉलन ग्रेन गिरते हैं, और यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है. यहाँ पर पॉलन ग्रेन जाता है, जिसके दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे. पॉलन ग्रेन के दो पार्ट बनते हैं, एक होता है वेजिटेटिव और एक होगा जनरेटिव पार्ट. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसका, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. जनरेटिव पॉलन ग्रेन के दो पार्ट होंगे, याद रखेंगे, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल is basically for the nourishment of generative cell. So basically generative cell is going to fertilize this ova which is inside this ovary, right? We'll discuss it later. To reach the ovule, where the male gametes are discharged. Male gametes, pollen grain, पहुंच जाएंगे वहां तक. While plants depend on water and wind for gamete transfer,
Unisexual animals such as human beings have developed a special mechanism called copulation for gamete transfer. गैमीट ट्रांसफर के लिए ह्यूमंस में या फिर Thus, एनिमल्स में आप जानते हैं ह्यूमंस की कॉपुलेशन है। यहाँ पर जो डिस्कशन हमारा है वो स्टेजेस में होगा। कैसे? सबसे पहली चीज़ इस जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे जब व्हाट आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेजेस, तो आप सीधे बताओ कि इसमें 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है पहले तो गैमीट्स बनने हैं। गैमीटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और गैमीट बनने के बाद उनका ट्रांसफ़र होना है। तो ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होना है? मेल टू फीमेल होना है। ऑफ कोर्स आपने देखा मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में गैमीट जाता है वाया सम मीडियम, यानी किसी न किसी के थ्रू उस पार्ट को जाना है, मेल के गैमीट्स को ट्रांसफर होना। अगर पानी है तो वाटर में तो बहुत इजीली फ्लो हो जाता है। अगर कोई लैंड प्लांट्स हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जो कि सॉइल में है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये कोई एडवांस प्लांट होते हैं, या तो विंड हो गया, या तो किसी मधुमक्खी के ज़रिए, बी के ज़रिए, या फिर ऑफ कोर्स किसी न किसी इंसेक्ट के ज़रिए, जिसमें हम किरोप्टेरोफिली पढ़ेंगे जो कि बैट के थ्रू होता है। बैट द चमगादड़ जानते हैं आप, किरोप्टेरोफिली, वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि पॉलिनेशन का पार्ट है। whether in animals or plants, एक प्लांट से दूसरा transfer प्लांट जो कि मोस्ट and फेवरेबल कंडीशन, gametogenesis मोस्ट फेवर्ड कंडीशन है, are the क्रॉस two main पॉलिनेशन। events that occur in the pre-fertilization stage of sexual reproduction. फर्टिलाइजेशन क्या है? The second stage in sexual reproduction ट्रांसफर हो is चुका also है, the यानी hallmark of अब the फर्टिलाइजेशन process. की बात करेंगे, यानी फ्यूजन की बात करेंगे इसमें। During this stage, the male and female gametes fuse to form a diploid zygote. अब डिस्कशन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमने टर्म दिया डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का सिंबल देते हैं 2n। अब जरा ध्यान सुनना, मेल से स्पर्म आया और फीमेल का ओवा, यानी अब याद रखेंगे ये तो इनसाइड द वुम्ब हो रहा है जो कि मदर के वुम्ब में होगा। अब याद रखेंगे यहाँ पर जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट के पास क्रोमोसोम कितने हैं? हाफ हैं। फीमेल का जो ओवा था उसके पास भी हाफ थे। फाइनली क्या बन जाना है? आप डबल हो जाओगे। याद रखें हमारी पूरी बॉडी में 2n है। हमारा केवल गैमीट में हाफ क्रोमोसोम आते हैं, राइट, और फाइनली हम क्या बन जाएंगे? 2n, यानी कि डिप्लॉइड हो जाने हैं। तो मेल और फीमेल से बनेंगे जो कि फाइनली क्या हो जाएंगे? डिप्लॉइड। पर मतलब होता है टोटल 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के दौरान यानी गैमीट्स के थ्रू हमारे पास केवल 23 क्रोमोसोम ही आते हैं जो कि फाइनली हम मिक्सचर हो जाते हैं अपने पेरेंट्स का। करेक्ट। Did you know that syngamy is the other word used to describe the process of fusion of Note it down. gametes or Fertilization is also fertilization? known as syngamy. Interestingly, fertilization does not occur in every sexually reproducing organism. In certain organisms, अब डिस्कशन such as हमारा होगा turkey, कि कहीं कहीं पे तो हमारा काफ़ी चीज़ें आप देखोगे कि आपने अभी पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे इंडिविजुअल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एंटायर एनिमल सिस्टम। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वहाँ पे हम नाम लेंगे पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी।